Question number 8 of the same exercise I gave you as homework. Those who have not done that, take a quick look at the statement. Question number 8, Shama bought some apples. The weight of the apples is given, and some mangoes. The weight of the mangoes is given. Sarla bought some oranges and some bananas. The weight for oranges and bananas is given. Who bought more fruits? Zyada fruits kaun leke aaya? And we will do the comparison by weight. So we will find out the weight of the fruits that Shama has bought and the weight of the fruits that Sarla has bought. उसके बाद हम compare करके बताएंगे कि who bought more fruits. And when you are performing addition or subtraction of values with multiple units, आपके पास जो यहाँ पे values हैं वो kilograms और grams में हैं. We are going to convert them first. We are going to convert them first, and then we will find out the total weight of fruits bought by Shama and Sarla. Then we will compare. So there will be two steps. Question number 8, first of all, for Shama. Yes, Gursimran, actually it's necessary to convert. Convert करने के बाद addition subtraction perform करनी है. We are converting into kilograms. You can do that in one step if you know how to do it correctly. You can directly convert and write 5.300. Make sure you write correct answer. Then we have weight of mangoes. Okay, Jivitesh. Let's find out the total weight of fruits. Perform the addition. I'm just writing down the values again here for addition. 5.300, arranging in columns, to 3.250 under 5.300. Make sure you've arranged in columns. Add this is the weight of the fruits that Shama has bought. Yes, Manreet. Right. Yes, Damandeep. Right. For Sarla, find out the weight of oranges in kg and the weight of bananas in kg. Add and find out what is the total weight. Oranges weight 4 kg 800 grams. This will be 4 plus 800 over 1000. This will become 4. Okay. Okay, Gursimran. 4.800 kilograms. For bananas, 4 kg 150 grams.
Yes. Yes, Gursimran, that's right. So you can compare once you have converted the values into same units. Okay, I'll wait. Note down. Let me know once you have written your work. This is just a fact that every time you are comparing quantities, आप जब भी quantities का comparison कर रहे हो, make sure the quantities are in same units. Here you had kilograms and grams for all the values. It could have been kg for some and grams for some. ऐसा भी हो सकता था कि कुछ के लिए kilograms होता और कुछ के लिए सिर्फ grams होते. उस केस में comparison is must. Very good, Jivitesh. Are you sure? Manreet, check your answer. Yes, yeah, it's okay. Note down and let me know. मनरीत अपना आंसर एक बार आप चेक करो सब्ट्रैक्शन जो आपने की है. Molly, which step बेटा? Okay, I'm just going to let you unmute yourself. Go ahead and ask. बोलो बेटा आपको कौन सा स्टेप नहीं क्लियर हुआ? Molly, but I'm not able to hear you. You are given values in kg and grams. It's like I am asking you to unmute. Unmute yourself. Molly, हाँ जी पूछो बेटा. मैम आप शर्ला वाला की एक्सप्लेनेशन दोबारा कर दो कैलकुलेशन की, मुझे समझ नहीं आई. सरला का जो दिया हुआ यहाँ पे देखो वेट दिया है ऑरेंजेस का 4 kg 800 ग्राम्स. इफ यू आर अवेयर कि हमने क्वेश्चन फोर्थ कैसे किया था. क्वेश्चन फोर्थ हाउ टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू केजी. चेक करो यहाँ पे जो 800 ग्राम्स हैं उसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में. तो मैंने क्या कर दिया उसको 800 बाय 1000 बना दिया. इसको फिर मैंने पॉइंट्स में चेंज किया है. यहां तक आता है आपको? Molly, can you unmute and answer? यस मैम. उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आप इस तरह ऐड कर रहे हो
जब आपके पास एक नॉर्मल नंबर है 4, ये बिना पॉइंट्स का नंबर है और इसमें हम एक डेसिमल नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो 4 को आप इस 0 के साथ ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा 4 और डेसिमल पार्ट आपका 0.800। ओके मैम। सेम थिंग हैज बीन डन फॉर बनानास। 150 को कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, उसका बन गया डेसिमल नंबर। फिर ये 4 और 0 ऐड होके बन जाएंगे 4 और पॉइंट के बाद वाला पोर्शन 150 एज इट इज। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया है, इसका टोटल निकाला है। ओके मैम। कॉलम्स में ऐड किया है, 0 + 0 इज 0, देन 0 with 5 will be 5, 8 with 1 is 9, 4 and 4 is 8. ओके मैम। एंड देन यू कंपेयर, उसके बाद आपको कंपेयर करना है जो वेट फ्रूट्स का है फॉर शामा एंड फॉर सरला, उनको कंपेयर करना है। फर्स्ट स्टेप में आपका टोटल आया था 8.550, ये वेट है of the fruits bought by Shama and this is the weight of fruits bought by Sarla. इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू लार्जर है। Let's write answer for 9th question. Question number 9th. How much less is 28 kilometers than 42.6? All the students who are doing their work, pay attention here. If you have a question where you want to find out how much less or how much more, the answer will be obtained by subtraction. Always. How much more, how much less. और subtraction कैसे करते हैं हम? Larger number minus smaller number. Very good, Harpreet. Keeping this in mind, let's write down the answer. The larger value will be written on top. It is 42.6 kilometer. The smaller value is 28 kilometers. I'm writing 28 as 28.0. Tell me if that's right. Now find out the difference. 6 minus 0 is 6. Borrow. This becomes 14.6 kilometers. Manreet, now you can check. Anyone who is on question 9th? Okay. Right, Ashit? Okay, I'm waiting. Let's wait for another minute.
Okay, there are students who are writing down. We are going to wait for them. Let them note it down. Afterwards, we will start with 2.6. Another minute. Hargunjot. You can unmute and ask. Okay. Okay, Japjeet. Can you hear now, Hargun? Okay, Ananya. Okay, Ananya. Okay, Harpreet. Okay, I think everyone has done. Okay, Neha, can you hear me now? Exercise 2.6, page number 42. Yes, Tanvi, we are going to write that down. It's actually not definition, but identifying what type of multiplication we have. Whenever you have multiplication of decimal numbers, try to identify what type of question you have. Accordingly, you will do your work. This is very important to identify कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है तो वो जो प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है वो किस तरह का है. I'm going to write it down. If you have started with the questions, you can note it down afterwards. अगर आप exercise start कर चुके हो, you can write this wherever you are. So I'm just going to write down the types. First of all, we could have multiplication of a decimal number with a whole number. Means एक नंबर हमारा पॉइंट्स वाला है, दूसरा नंबर बिना पॉइंट्स के है. Second, when you have point in both the numbers, दोनों जो values हैं वो decimal values हैं. Then third type is when you have a decimal number multiplied with 10 or 100 or 1000, these kind of values. तो तीनों में जो हमारी सॉल्विंग होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी. Yes, you have to write this before we do exercise 2.6. Yes, Sia, kindly note this down. Question number 1, first part. Tell me which type this is. Question 1, first part. Okay, I'll wait for you to write that down. Right, Harsheen, your answer is correct.
Right. Okay. Now just watch. If you're writing down, I want you to stop writing for a while. Yes. Stop writing for a while, everyone, and pay attention. Hargun, beta, please pay attention. Just look at your screen. Let us see how we are going to multiply. ये हमारे पास है टाइप 1. आपके पास एक जो वैल्यू है वो पॉइंट्स वाली है और दूसरी वैल्यू बिना पॉइंट के है. राइट रेयान? If you are trying to multiply two numbers और उनमें से एक नंबर पॉइंट्स वाला है और दूसरा नंबर बिना पॉइंट्स के है, नो वी डोंट नीड टू, हमें नहीं जरूरत, इसमें बिल्कुल कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट यू वांट टू डू इज, आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे विदाउट द पॉइंट. 0 to पॉइंट हटा दो उसका और 6 इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो. The answer comes out to be 12. Now we put the point back. To put the point back, अपने डेसिमल नंबर में काउंट करो कितनी फिगर्स थी पॉइंट के बाद. क्वेश्चन में जो आपका डेसिमल नंबर है उसमें पॉइंट कितने फिगर्स के बाद लगा है, काउंटिंग फ्रॉम द एंड. सो हेयर यू कैन सी पॉइंट के बाद कितने फिगर्स हैं, जस्ट 1. तो आंसर में हम 1 डिजिट काउंट करेंगे, फ्रॉम द एंड पीछे से काउंट करना है और फिर पॉइंट लगा देंगे. Let's do, okay, Ryan has a question. I will take one more part. Consider sixth part of the same question. सेम क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास. वी हैव 211.02 मल्टीप्लाइड विद 4. पॉइंट हटा दो और प्रोडक्ट फाइंड आउट करो. सो 21102 मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो. साइड पे फाइंड आउट व्हाट द आंसर इज. टेल मी इफ आई हैव डन द मल्टीप्लिकेशन करेक्टली. अब आपको पॉइंट वापस लगाना है. पॉइंट वापस लगाने के लिए क्वेश्चन में देखो, जो भी डेसिमल नंबर था उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. काउंट द डेसिमल प्लेसेस. तो पीछे से काउंट करो 1 2 एंड पुट द पॉइंट बैक. Okay, Jivitesh, but if you have multiple figures, like if you have multiple digits, then you have to carry out the multiplication in the working column. Tell me if it's clear. You are going to do the multiplication without the point. आंसर जो आएगा उसमें हम पॉइंट वापस इंट्रोड्यूस करेंगे. Now you can note down. Those who have understood, they can continue with the next part. Yes. Yes, you can write sixth part. बाकी बाद में कर लेना order में, चिराग. Yes, Rayan. Yes, Sia, you have to show the multiplication. Yes, Tanvi. Excuse ma'am. Yes, beta. Ma'am, how to arrange second part of the question?
8 into 4.6. Yes, ma'am. Do it the same way. Point हटा के multiply करो 8 को 46 से. 46 को आप ऊपर लिख सकते हो, 8 को नीचे लिख सकते हो. Okay, ma'am. Thank you. When you put the point back, digits की counting end से करनी होती है, पीछे से. जब भी point put करना है, पीछे से counting शुरू करनी है digits की. Starting से नहीं करना count, पीछे से count करना है, backwards. Now I'm going to continue in the order. Yes, beta. Yes, Molly, आप larger value को ऊपर लिख सकते हो. 8 into 4.6. I'm going to write down this on the top, 46 on the top, and then multiply. It comes out to be 368. Now put the point back. Point के बाद एक digit नजर आना चाहिए. Very good, Tanvi and Gursimran. Wonderful. Wonderful. That's right. No, Harpreet, we have to do all parts. Take a look. We are doing all parts. मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने फर्स्ट और सिक्स्थ पार्ट करवाया है. हम बाकी के पार्ट्स कर रहे हैं. Chirag, I think you are on the next part. I haven't done that yet. Let me do that, then I will check your answer. Very good, Manreet. Very good. Very good. Third part, we have 2.71 multiplied with 5. Okay. Multiplying the values without the point. 271 with 5. The answer is 1355. Put the point back. 2 decimal places. Anhad, unmute and ask. Ma'am, my phone battery is dead. Can I leave? Yes. Okay. Gursimran is also on the next part. Yes, Gursimran, your answer is correct. 0.35. Fourth part. Correct. The answer is 80.4. 201 multiplied with 4. Put the point back. Multiplying without the point. And then put the point back. Yes, it's correct. Okay, Kampreet. Okay, Sia, very good. Yes, Chirag, Gursimran, Harsheen, Samaira, Tanvi, your answers are correct. Very good. Yes, Harsheen, all answers are correct. Very good, Angadmeet. Yes, Gursimran. Let me finish this. Multiplying 086 with 2. 086 with 2.
You get 172 as your answer. Now put the point back. There are 2 decimal places. Point will be put by counting 2 digits from the end. So last से count करना है और 2 digits के बाद point place करना है. 1.72 is your answer. अर्षित बेटा point लगाना भूल गया. Point लगाओ. Yes, Samira. Parth, correct. Chirag, I'll provide the homework in the WhatsApp group. मैं वहां पे share करूंगी. हरगुन बेटा, I think आपने complete answer नहीं लिखा. Yes, now it's correct.